Hello everyone, welcome to the Hindu editorial analysis of the 27th of April. My name is Vaishnavi and I welcome you all to this lovely session. Can you see and hear me? All right, let's get started. Okay. Hi Nishita, hi Alpesh. Hello, good afternoon. Good afternoon everyone. Welcome to today's session. Okay, John Doe is here. Okay. Chandan, good afternoon. Rahi, good afternoon. Hello. Hanaya, hello. Hello, Manas. And good afternoon, John Doe. All right, so let's get started. आज का editorial, as you already know, you must have seen the editorial. आपने देखा होगा editorial. कि again, the editorial that we have today बहुत ज़्यादा नहीं है. It is on a lighter note. Even if you don't understand the vocabulary, आप gig economy भी नहीं अगर जानते होंगे तो भी it is very self-explanatory. आपको समझ में आ जाएगा passage. तो tone पहचानना I think today will be a little easier for everyone. Hi Nishita. Okay. Hi Manas. Hi. Let's get started. तो सबसे पहले शुरू करते हैं with the very important thing that is this is me and ये मेरा टेलीग्राम चैनल है. अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये QR कोड स्कैन करें और अभी के अभी ज्वाइन करें मेरा टेलीग्राम चैनल बिकॉज उसी में मेरे क्लासेस कब कब होते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म पे हो रहे हैं, all that information is given on my telegram channel. Okay, so if you want to know about my classes, please make sure कि आप join करें. All right, let's और अगर आपको मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो मेरा if you simply type Vaishnavi Pandey 31, you will be able to find me. Okay. Hi Triranga. Hello. सो आज बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं है और जो वर्ड्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर रिपीटेड और फ्रेजल वर्ड्स. ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास हेरल्ड. शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वर्ड हेरल्ड. ओके, हेरल्ड किसको कहते हैं? कोई चीज का, अगर कोई चीज किसी चीज के होने का साइन होता है. ठीक है, सो बेसिकली एनी सॉर्ट ऑफ साइन या सिंबल ऑफ समवन्स अराइवल, कोई आने वाला है या कुछ आने वाला है, उसका जो साइन होता है दैट इज कॉल्ड herald. Okay, so it is being used as a verb और noun की तरह भी अगर use होता है तो um, it's the coming of arrival of someone or something. Okay, tidings भी हमने पहले देखा है ये word. Herald is be a sign that something is about to happen, कुछ
होने वाला है उसका साइन जो होता है दैट इज कॉल्ड अ हेरल्ड. ओके. टाइडिंग्स इज अ नाउन जिसका मतलब होता है यूजुअली यूज्ड इन प्लूरल. पहले तो ये टाइडिंग्स ही यूज होता है जनरली, एंड इट इज बेसिकली अ पीस ऑफ न्यूज. सो कोई भी पीस ऑफ न्यूज, तो अगर मैं टाइडिंग्स, तो टाइडिंग्स नाउन है. टाइडिंग्स. सो इफ आई हैव टू, अगर मुझे किसी को विश करना है, ठीक है, दैट लेट्स से अच्छा न्यूज मिले आपको. ओके. सो आई विल से गुड टाइडिंग्स टू यू, गुड टाइडिंग्स टू यू, और glad tidings. Okay. Wishing you all good tidings in the upcoming CLAT exam. Okay. So good tidings is basically, I hope that you hear good news. Okay. So basically a piece of news हो गया tidings, और good लगा देते हैं as an adjective, तो ये good news. Okay. Now the next word is gig economy. Gig economy is a noun जिसका मतलब होता है a labor market characterized by the prevalence of short-term contracts or freelance work as opposed to the permanent jobs. Okay, so basically gig, uh, you must have heard Americans use it a lot. That I recently found a gig. Generally, band and music players use the word gig a lot. Okay, so I came across this gig. So basically, it is like a एक इंस्टेड ऑफ एक्चुअल परमानेंट जॉब. ओके. परमानेंट जॉब की बजाय अगर कोई कंपनी आपको हायर करती है फॉर अ कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड, शॉर्ट टाइम के लिए, लेट्स से 3 months या 2 months, एंड और 6 months इवन, हायर करती है आपको, और उसके बाद आपको, आप उस कंपनी, जब आप कंप्लीट कर लेते हैं अपना टेन्योर, उसके बाद आपको उस कंपनी से कोई रिश्ता नाता नहीं रहता, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी, राइट? सो दैट इज अ गिग इकोनॉमी. बेसिकली फ्रीलांसिंग इज गिग इकोनॉमी. ओके. सो अ लेबर मार्केट दैट जिसमें शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या फ्रीलांस वर्क होता है एज अपोज टू परमानेंट जॉब्स. परमानेंट जॉब्स नहीं होते हैं, फ्रीलांस वर्क होता है. ठीक है. दैट इज गिग इकोनॉमी. नाउ आउटलेट इन जनरल अगर हम देखें, तो आउटलेट जनरली क्या मतलब होता है आउटलेट का? कोई भी जगह से, इट्स बेसिकली अगर कोई पाइप या एनी सॉर्ट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, या कोई भी ऐसा बेसिकली पाइप्स. ओके. सो उसमें अगर हम देखें कि द प्लेस वेयर द वाटर कम्स आउट फ्रॉम, गशिंग आउट फ्रॉम, जहां से पानी निकलता है, दैट इज कॉल्ड द आउटलेट ऑफ द होज और द पाइप. ओके. So outlet in general ये मतलब होता है, but here we are talking about an outlet as in a place जहां पर सामान खरीदा और बेचा जाता है. Okay, so you can say the uh, grocery outlet or the sports outlet. Okay, so basically it can be any. It is just another word for a shop. Okay, in general terms, outlet, a point from which goods are sold or distributed. Okay, that is called the outlet. So shop in general. ठीक है. नाउन है आउटलेट. मूनलाइट. मूनलाइटिंग करना क्या होता है? बेसिकली मूनलाइटिंग, अगर आप कोई एक जॉब कर रहे हो, उसके साथ आप सेकंड जॉब ले लेते हो, जो नॉर्मल बिजनेस आवर्स में नहीं है. जैसे नॉर्मल बिजनेस आवर्स आपका क्या हो गया, 9 to 6 हो गया, दैट इज नॉर्मल बिजनेस आवर्स. बट अगर उसके अलावा भी आप वो खत्म कर रहे हो, उसके बाद आप कोई और जॉब ले रहे हो, लेट्स से नाइट शिफ्ट, या या graveyard shift. ठीक है. So that is called moonlighting. Okay, it is a phrase which is used for when someone is taking a job जो normal job नहीं है, it is a second job, and it is not in the normal working hours. It happens outside the normal business hours. Okay, so now normal business hours would be 9 to 6, and it happens outside that. All right, let's look at the
Hanaya, hi, you were not there yesterday again. I missed you, but you were there for the special session. No, you were not even there for the special session. Hanaya, where were you? But you were there for some session yesterday. The preparation at my uncle's place are herald of wedding. Yes, very nice, very nice. बट हनाया अंकल यहाँ पर कैपिटल नहीं होगा ठीक है अंकल बिकॉज इट इज कॉमन नाउन ठीक है अंकल कैपिटल नहीं होगा एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू विल हैव apostrophe s uncle's house uncle's place okay in Hindu mythology a raven's appearance on the terrace is a herald that someone will visit the house soon very nice Manas good job what a beautiful sentence Nishita whenever anything happened to my family members I got a herald of it okay so whenever anything bad happened to my family I got a herald of it okay very nice Nishita glad tidings to those who have faith in themselves very nice Sanaya good job glad tidings Manas, I eagerly awaited tidings from my sister, hoping to hear about her travels abroad and all of the exciting adventures she was sure to have. Very nice, Manas. Good job. Wish you a good tidings. Wish you good tidings. Not a good tidings. Wish you good tidings. Okay, because ये plural form में use हो रहा है ना, तो good tidings. Wish you good tidings for exam preparation. Sorry. Wish you good tidings for your future life. Very nice, Nishita. Good job. And an exclamation mark. Yeah, you can put a full stop over there. Okay. Clearly, the president's announcement heralded a major initiative. Very nice, Sriranga. Morning tidings for exam preparation. Morning tidings. This is a morning tiding. Okay. Okay. This class is a morning tiding for exam preparation. Okay, John Doe, good job. Normally, big company don't believe in gig economy. Very nice, Nishita. Good job. The rise of the gig economy has led to more workers seeking flexible short-term employment opportunities rather than traditional full-time jobs with one employer. Manas, good job. I think it is a copy paste from the news. He has started his gig economy company recently. Very nice, Hanaya. Alpesh high. Tiger sneaks silently. He makes sure the prey doesn't get any kind of herald. Very nice. The tiger sneaks silently so as to ensure that the prey doesn't get any kind of herald. Okay. So as to ensure that the prey doesn't get any kind of herald. Very nice, Alpesh. Nowadays, private sector people prefer gig economy jobs. Very nice, Alpesh. Good job. New Apple outlets were launched in various cities of India. Very nice. Good job, Manas. On Sunday market, we usually see an outlet of clothes. On Sundays, okay, on Sundays, we visit the market to see or to shop in a clothing outlet, okay, to shop in a clothing outlet, okay, Nishita. And Sunday will always be capital, okay, because it is proper noun. There's only one Sunday, one day that is called as Sunday. The flight is ready to fledge. The flight is ready to fledge. Very nice, John Doe. Good job. The tidings from meteorological department is that this year extraordinary rains will be heralded. Very nice, right? Good job. Alpu. Now, Sriranga, you guys have moved to moved to nicknames like Alpu and what will your nickname be? I'm really excited to see that.
But Alpu immediately spread the good tidings among my married colleagues. Very nice. Good job, Alpu. School gave tidings about the upcoming boards. Very nice. Hi, everyone. Hi. Although it was against company policy, I took on a second job as a writer, moonlighting on weekends to help pay his bills. Whose bills? My bills, right? To help pay my bills. Manas, you forgot to correct that part. Ishant, hi Ishant. Explorers Herald warns. Okay, Explorers heralded warnings that the island is shrinking. Leave now. Okay, explorers heralded warnings that the island is sinking, not shrinking, sinking. Leave now. Okay, very nice, Ishan. Good job. Rutuja, there was an outlet of all that's coffee besides Bruno's house. There was an outlet of all that's coffee besides Bruno's house. Very nice. But Rutuja, Bruno is name of a person and you don't put double apostrophe, single apostrophe, right? So it should be capital Bruno's. All right. The outlet of Apple store has been inaugurated in Delhi. Very nice, Rutuja, by the way, and very nice, Naya. Good job. It heralds a raining season. It heralds. It heralds about the rainy season. Okay, or the rainy season. All right, John Doe. Manas, although it was against company policy, I took ये वाला मैंने पढ़ लिया है. Hanaya, ma'am, I have my last paper yesterday of 11th board. Woohoo! I hope it went well, Hanaya. Congratulations. Good job. You finished your exams. Yay. I used to be so relieved after finishing my exams. I cannot tell you. Okay, Triranga. Uh, Cosmetics became the perfect outlet for Nishita's aggression. Cosmetics? Cosmetics. Very nice, Triranga. You want to fight? Nishita will bring it on. Don't worry. Alpesh, majority of MBA chaiwala outlets have gone bankrupt, leading FIRs against FIRs against company owners. FIRs against company owners. Very nice, Alpesh. The early flower are heralds of spring. Very nice, Ishant. Sneha, Snehansha. Snehansha, moonlights at night to eradicate corruption and protect the most vulnerable. Very nice. Or generally, moonlighting is to pay bills, right? Or if someone is feeling really generous, then what Ishan said. है ना? Good job, Ishant. Alpesh, his mom worked moonlightingly to cover for his school. Very nice. You changed the form. Very nice. I'm trying to find a moonlight job. Very nice, Naya. Good job. Once I was a mere security guard. Now I'm moonlighting as an HOD of ISRO. Very nice. My God, Triranga. Good job. Nishita, ma'am, Sunday market is the name of the market. Okay. So you have to keep it. देखो इसीलिए that's why I tell you कि proper noun आपको हमेशा capitalize करना पड़ता है क्योंकि समझ में नहीं आता है कि proper noun है. So you have to, since it is the name of the market, you will use Sunday market. You will use it in capital letters. ठीक है? There was an outlet of Starbucks beside my alley. Okay, very nice. Hivan, good job. Ravivar Mandi, yes. Sunday market. Sunday is Ravivar? Oh my God.
Okay, Hanaya, I was able to witness a a fledgling eagle, okay, fledgling eagle in the sky, okay. Fledglings are the new birds that just learn to fly, okay, fledglings, like, um, okay. Let's, since you have already reached the word fledged, let me just talk about fledged यहाँ पर कैसे use हुआ है fledgling. In the passage it is used as fledgling. Fledgling is a bird. अगर किसी bird के बारे में बात करें तो ऐसी bird that has just learned to fly, okay, is a fledgling, okay. So of a young bird having wing feathers that are large enough for flight, able to fly. So fledged is able to fly. Fledgling is someone, a bird that is fledging for the first time. Okay, is fledging for the first time. So that is fledgling is a bird is that recently learned to fledge. Okay. ठीक है, फ्लेज करना रिसेंटली सीखा है, तो बेसिकली उड़ने की कैपेसिटी जब हो जाती है, जब विंग्स इतने बड़े हो जाते हैं बर्ड्स के, जब वो उड़ सकते हैं और रिसेंटली उड़ना शुरू करते हैं जैसे ही, तो उनको कहते हैं फ्लेजलिंग. तो अगर वो उड़ सकते हैं तो उनको कहते हैं that they are able to fly, they are able to fledge. Okay. Tiran. Okay. So, and you have only given fire to yourself, to your name. Tiran. Wow. Okay. Alpesh, I was talking about you and Raga. Okay, so let's stick to giving nicknames to Tiranga. Okay, Tiran. Alpesh, Praful billionaire. Below. Will Su Alpesh Praful Bilor will sue you for this type of claim. Very nice, Tiran. Tiran gets a herald about Nishita's reply from Matt. Very nice, Alpesh. You have been on it. Nishita, uh, life always life always gives an opportunity, okay, an opportunity, so that we can fledge, not fledged, fledge. ed फॉर्म यहाँ पर यूज किया है मैंने, fledged. Okay, fledge. ये पास्ट फॉर्म है, ठीक है. अनफॉर्चुनेटली Truranga missed that chance and I used it and now I am CJI. Nice. Okay, Nishita, good job. Nishita, इसके लिए okay. Manas, Tinkerbell would often help the newly fledged baby birds, learn to fly by sprinkling them with fairy dust and giving them a gentle push. Very nice, Manas. Such a sweet statement. I remember these stories. Very nice. Hanaya, now when I'm done with my 11th board, I feel like I'm a fledgling bird now. Very nice, Hanaya. Yes, you should feel like that. You've got a new set of wings to fly. Uh, Nishant, why are you making these names, Nishant? I don't understand. As it is, मुझे नाम के साथ problem है. I never take the right name or pronounce the right name. And then you come up with names like this. Sahanisha. Okay. So let's stick with एक पिछले बार आपने क्या किया था, स्नेहा और आकांक्षा को कंबाइन करके स्नेहाकांक्षा. अब दिस इज शानिशा.
Okay, moonlights at night to eradicate corruption and protect the most vulnerable. Now it's fine. Yes, Ishant, now it's fine. Uh, and Ishant, I think I only asked for it because मैंने बोला था tough words से sentences बनाने, आपने नाम भी tough कर दिया उसमें. Good job. You're taking me too seriously. Very nice. Uh, दोनों, okay. Bruce Wayne moonlights to fight crime in Gotham. Very nice, Alpesh. Wow, wow. I'm so proud of you. Good job. Um, Disney has become the undead, but he waits reanimation as a fully fledged zombie. Disney has become the undead, but he waits. Who waits, Hivan? Who waits? He awaits reanimation as a fully fledged zombie. Okay, Disney is the name of the person. Okay, then it makes sense. Disney has become the undead. Okay, the rise of the Walking Dead, the undead, but he awaits reanimation as a fully fledged zombie. Okay, I got it now. Hivan, good statement. Very nice. Computer science is now a fully fledged academic subject, but क्या हमको क्या we are law students. Sri Lanka. Okay, moving on to the next set of words, envisage. Envisage is envisage, okay? Envisage. किस पे stress आता है? V पे आता है stress. V. Envisage, okay? Envisage is a verb which means to contemplate or conceive as a possibility or a desirable future event. ठीक है, तो किसी भी चीज के बारे में सोचना, okay? उसके बारे में बहुत गहराई से सोचना कि ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है. ओके, किसी भी चीज के बारे में ये गहराई से सोचना कि ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है इन द फ्यूचर, और या ये भी एक चीज हो सकता है जो हमें फ्यूचर में कुड बी समथिंग दैट इज डिजायरेबल. ठीक है, ऐसा इवेंट जो हमें चाहिए फ्यूचर में प्रॉबेबली इज एनविसेज. ओके, सो बेसिकली कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी जिसके बारे में आप सोचते हो कि इन द फ्यूचर इट कैन हैपन और एक अच्छा चीज हो जाएगा अगर ये हो जाएगा इन द फ्यूचर, so that is to envisage. Okay, grievance is basically a noun. Grievance is basically अगर आपको किसी से कोई तरीके की इश्यू या परेशानी है, अ रियल और इमेजिन कॉज फॉर कंप्लेन्स. ठीक है, तो कोई परेशानी, कोई इश्यू है, स्पेशली अनफेयर ट्रीटमेंट रिलेटेड. ठीक है, ग्रीवेंस इज जनरली अबाउट कि मुझे सही ट्रीटमेंट नहीं मिला और मुझे मुझे अनफेयरली ट्रीट किया गया. सो ऑल दिस इज ग्रीवेंस. ओके, सो इट कैन बी रियल या इमेजिन सिनेरियो हो सकता है. आपने मन में सोच लिया ऐसा लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन आपने सोचा ऐसे ही हुआ था. ओके, सो दैट कैन बी ग्रीवेंस. ओके, so grievance is also a word that we have seen very often, and visage is a word that we have, it's a high frequency word. Then you have gig economy. Herald is also important. Okay, specificity. Specificity is a noun जिसका मतलब होता है the quality of belonging or relatively relating uniquely to a particular subject. ठीक है, the quality of belonging or relating uniquely to a particular subject is specificity. ठीक है, किसी भी एक specific या पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बिलोंग कोई चीज करता है, उसका होता है, कोई भी एक सब्जेक्ट का पार्ट होता है, तो दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट स्पेसिफिसिटी. ओके, the quality of belonging or relating uniquely to a particular subject is specificity.
नेक्स्ट वर्ड इज कॉपस. कॉपस भी हमने पहले देख लिया. ओके, is a collection of written text, especially the entire work of a particular author or a body of writing on a particular subject. Okay, so कोई भी चीज पे कोई अगर लिखता है, ओके, कोई भी एक सब्जेक्ट पे लिखता है, body, okay, basically not just one person, uh, but a group of people writing on a particular subject, या कोई एक ऑथर लिखता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में. बेसिकली सारे रिटन टेक्स्ट का कलेक्शन को कहते हैं कॉर्पस. ओके, रिटन टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन को कॉर्पस कहते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ नाउन. So the words that we did is herald, tidings, gig economy, outlet, moonlighting, which is a phrase. ठीक है, moonlighting is a phrase. Fledge, envisage, grievance, specificity, and corpus. All right, moving on to the last three words that we have is compel. Compelling, compel is force or oblige. ठीक है, तो कोई भी किसी को भी force या oblige कर देना कि आपको ये करना ही पड़ेगा. ओके, आपकी मजबूरी है, आपको ये करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा. ओके, so I'm compelling you. Okay, so I'm forcing you to reconsider. Okay, so I'm compelling you to reconsider is basically मैं आपको दबाव डाल रही हूँ ताकि आप वापस से इस बारे में सोच सके. Okay, so to compel is to force or oblige someone to do something. Okay. Okay. Schema. Next is schema is closer to scheme. Okay, schema is a noun which is a representation of a plan or theory in the form of an outline or model. तो basically किसी भी चीज का scheme बनाना, okay, plan बनाना, किसी भी चीज का model बनाना, prepare करना उसे is scheme. Okay, so किसी भी चीज को प्लान करना या उसका थ्योरी को आउटलाइन करना या मॉडल को आउटलाइन करना इज a schema. Okay, it is also a noun, so it will be used in the form of, so this company schema looks great. Okay, looks promising. इस कंपनी का schema promising लग रहा है, that means इस कंपनी के जो plans हैं वो बहुत ज्यादा promising लग रहे हैं. ठीक है. पाइनियरिंग. ओके, पाइनियर कौन होता है? बेसिकली कोई एक ऐसा इंसान जो अपने फील्ड में बहुत ही अकम्पलिश्ड रहता है, राइट, इज अ पाइनियर. ओके, अपने फील्ड में, सो इज वेरी अकम्पलिश्ड. ओके, सो पाइनियर वो हो गया, राइट, सो ही इज अ पाइनियर इन द फील्ड ऑफ लॉ. ओके, सो पाइनियर. एंड पाइनियरिंग इज द वर्ब फॉर्म, क्योंकि आईएनजी लग रहा है, सो यू अंडरस्टैंड दैट इट इज द वर्ब फॉर्म. Develop or be the first to use or apply a new method, area of knowledge or activity. It can be anything. Develop or be the first to use or apply a method. तो कोई भी पहला इंसान जिसने कोई भी चीज को develop किया है, ठीक है, is for the first time. ठीक है, कोई भी चीज को नया शुरुआत किया है, कोई भी एक नया मेथड को या एरिया ऑफ नॉलेज को या किसी एक्टिविटी को नई शुरुआत की है, so that is called pioneering. Okay, all right, so the words that we have done, let's look at in case sentences. Words haven't yet fledged. Very nice, Akarshan, good job. After a year of practice and study, he financially became a fully fledged lawyer. Very nice, Ashant, good job. Very nice statement. uh, very nice statement, actually, Ishant. Manas, I can envisage myself graduating from college and starting a new career in a field that I am passionate about. Very nice. Brilliant, Manas. Just envisaging that I can bring rank AIR too. Very nice, John Doe. Good job. I really hope you do. Ishant, take your jewelry. Hanaya,
If I clear UPSC exam after becoming a lawyer, it will be envisaged. It will be envisaged. Okay. It will be my envisage. Okay. It will be my envisage. In the futuristic society, machines have taken, they envisage machines have taken over most jobs and humans are left idle. Very nice question, but that will not happen. I mean, yes, there has been a lot of discussion about human beings being idle after AIs take over and machines take over. Very nice answers. Mm, if Alpesh, Nishita, Ishant fixed their focus with enough concentration, they could envisage the invisible barrier and then fire. तिरंगा सेंटेंस सही नहीं है, by the way. प्लीज इसको थोड़ा सा सही करो. Okay, they can envisage enough concentration. They could envisage a good life or a successful career. Okay, not invisible barriers. Okay. It's high time now. Grievances must be taken seriously. It's high time now. Grievances must be taken seriously. Very nice, Hanaya. Good job. I never believe in grievance. That's why I have envisaged that whenever I get a chance to meet with Sriranga and Alpesh, I will ask them. Then why you always make sentences on me? This is what Nishita has envisaged, that she is going to ask both of you guys as to क्यों आप इन पे sentence बनाते हो. Okay, Nishita, good job. Rutuja, I am envisaging my parents for the. I don't think people have understood envisage का मतलब किसी चीज के बारे में सोचना या conceive करना as a possible और desirable future. ठीक है. Envisage करना मतलब बस future के बारे में सोचना नहीं होता है. फ्यूचर के बारे में बस सोचना नहीं होता है. एनविसेज करना मतलब आप कैसे मेरा फ्यूचर इतना सुंदर होगा, अच्छा होगा. सो इट इज ऑलवेज ऑन द प्लस साइड. ओके, पॉजिटिव साइड व्हेन यू आर थिंकिंग ऑफ हैविंग कि काश मैं जो जो सोच रही हूँ सब सच हो जाए. ओके, सो द थिंग्स दैट आई एम एनविसेजिंग will come true. Okay, so situations like this आप इसको पॉजिटिव वे में बनाने की कोशिश करो. Okay, I'm specifically concentrating on CLAT this year. Very nice, but specificity hai. Specificity. See you in court. Ahanaya, I am not compelled by anything other than studies at this point in life. Very nice, Hanaya. Very nice. निशिता 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 आप कितना स्ले करते हो लोगों को. You roast them. Manas, Disney's ability to create compelling stories and lovable characters has made it one of the most successful entertainment companies in the world. Very nice. Compelling se banaya apne. Manas, you make really good sentences. I plead guilty. Even if you don't, you will be convicted at pace because it is Nishita. For all the crimes that you've committed throughout your life, you will be convicted. Okay. For years, she had nursed a grievance against her former employee, and that savage employee was me. So good job, but uska pronoun thoda sa change kar dena. Teachers always compel us to complete the project. Yes, they do. Oh. The government schema are very thoughtful. Very nice, Hanaya. Good job. Simple and sweet. They were pioneer. They अगर आप लगा रहे हो तो pioneers हो जाएगा, right? Plural form आप use करोगे. Lucky JT. They were pioneers in the field of American medicines. Very nice.
Manas, Marie Curie was a pioneering scientist. Very nice, Manas. Good job. Marie Curie पे sentences बन रहे हैं. Wow. Marie Curie. Nishita, uh, before doing anything, just make a schema of it. Very nice, Nishita. Good job. Leonardo and Michelangelo pioneered the portrayal of violent actions. Very nice, Krishnan. Wow. My God. John Doe, he is a pioneer in being a psychologist and counselor. Very nice, John Doe. Good job. Court compelled government to share the details regarding the deal. Very nice, Alpesh. My mom is a pioneer in the field of roasting me. Very nice, Avishi. I'm sure she is, and I'm sure everybody's moms are. Okay, if they are not roasting you, there's something wrong. It's the schema of my preparation. It's the schema of my preparation. यहाँ पर IT apostrophe S होगा John Doe IT apostrophe S. It is because Suranga, we have brought in experts like Vaishnavi ma'am to advise on the scheme. Human, Alex, oh sorry, yes, Alex felt compelled to speak. Very nice. Guys, please make sure proper nouns में अब आप capital letters use कर रहे हो because अच्छा नहीं लगता आप इतने अच्छे अच्छे statements बनाते हो and then the slightest of grammatical mistakes like I छोटा लिख रहे हो apostrophe गलत लगा रहे हो start अगर proper noun को छोटा लिख रहे हो these mistakes are and full stop नहीं लगा रहे हो okay so these mistakes cast a very bad impression छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ज्यादा impression बुरा आता है so and it is difficult to read as well because I will be considering it as a common noun अगर आप छोटा लिख रहे हो तो and hence there can be a lot of confusion so please make it easier for me to read pretties please okay they were pioneer in the field of American medicine ये मैंने पढ़ लिया I have pioneered the habit of going for a walk in the evening very nice Hanaya in home while cooking I try to pioneer not pioneering pioneer and that's why pioneer it that's why I always cook something new and that's why I always destroy the food. Wow, Nishita, I understood your thought process. Very nice. My friend is compelling me to have a one sip of alcohol. Do not listen to that friend. That is not your friend, John Doe. Okay. He is definitely not your friend, or she is definitely not your friend. Alpesh, if you are not sure of the future, just yourself, envisage yourself making a scheme. Okay, envisage yourself making a schema and start pioneering in your career. Okay, parallelism. Pioneering आप use कर रहे हो, making. Okay. If Alpesh, Nishita, and Ishant focus with enough concentration, they can envision the invisible barrier. They can get past the invisible barrier. अगर वो देख लेंगे invisible barrier, तो the barrier still remains, right? Ishant, मेरा point क्या है यहाँ पर? The things that you're saying is absolutely right. Still, आप envision भी कर दिया उसको आपने envisage and envision are very very similar ठीक है लेकिन the invisible barrier is what I have a problem with ठीक है आप बोल रहे हो कि उनको दिख जाएगा invisible barrier उससे क्या होगा बैरियर तो बैरियर ही है ना अब वो चाहे विजिबल बैरियर है इनविजिबल बैरियर है यू स्टिल नॉट टॉकिंग अबाउट द सक्सेस all your success ठीक है so you should talk about that one of my grievance is that if my parents know not knows about me I am in a relationship and then they will compel me to get rid of it nahi rid of her right and it would be envisaged upon me okay and it would be envisaged upon me
um, but I don't understand the context of the word envisaged over here upon me. So statement is almost correct. Okay, one of my grievances is that if my family finds out about my relationship, they would ask me to get rid of my relationship or my girl or my girlfriend, and it would envisage upon me. Okay. Christmas postman brought young people tidings depicting jolly Santa and festival reindeer. Very nice, Krishnan. Good job. Introverts feel grievance in social gatherings. Um, Introverts feel aggrieved. Okay, aggrieved in social gatherings. Okay, Alpesh? She played a pioneering role for making Alpesh a brilliant businessman. Very nice, Triranga. Nikola Tesla envisages an era of great scientific discoveries. Very nice. I love that man. I mean, Nikola Tesla was good job, human. Basically, good job. Really nice sentences today. Um, that's why okay, okay. I'm reading a conversation. I'm like, okay, okay, it's still a Arpita, the NGO has won awards for pioneering work with the community. Very nice, Arpita. Good job. Despite having a legitimate grievance against her boss, Nishita decided to bite the bullet and continue working until she found a new job. Very nice, Ishant. Finally, a brilliant master stroke given. Okay. Uh, the schema looks as if it's meant to do something more. Very nice. Good job. All right, so that is, these are the words and these are the sentences brilliantly done. I must tell, boys and girls, you have been doing tremendously well. बहुत ज़्यादा ही अच्छा करने लगे हो आप सब. And I like how you get creative about it. I like how you try to make up stories and so show beautiful pictures. मतलब इन sentences से हमने इतनी सारी कहानियां सुन ली अभी तक. In just a span of 2 months, we have heard so many nice things, and it is brilliant how you guys are doing it so well. So keep up the good work, all of you. Make sure you keep coming back, okay? Keep coming back. ऑल राइट सो इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अन अकेडमी का मेगा ऑफर चल रहा है जिसमें आपको एक तो 35% ऑफ मिलेगा प्लस फ्री एक्सटेंशन मिलेगा प्लस प्रिंटेड मॉक्स मिलेंगे अगर आप क्लैट सब्सक्रिप्शन लेते हो तो और ये ऑफर बस 30th अप्रैल तक है क्योंकि 1st मई से प्राइस हाइक होने वाला है सो इफ यू वांट टू अवेल दिस ऑफर प्लीज यूज माय कोड विच इज वैष्णवी 10 अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको 9 मंथ्स का प्लस बैच 36,750 में मिलेगा अगर 12 मंथ्स वाले बैच में इनरोल करते हैं तो 39,000 में मिलेगा लेकिन 1st में ऑनवर्ड्स आप देखो प्राइस में डिफरेंस 53,900 एंड 57,200 सो हरी अप मेक श्योर दैट यू यूज माय कोड टुडे and enroll yourself in classes. अब free printed mocks आपको available है just at a price of 3,000 if you use my code VAISHNAVI 10. Use my code Vaishnavi 10 and again this offer is only valid till April 30th. So जो भी decision आप करने वाले हो बनाने वाले हो if you are buying any of the subscription my advice is that please make sure कि आप 30th April से पहले करो okay because this offer is not going to come again okay so use my code Vaishnavi 10 और इसमें आपको क्या मिलता है ये जो mock printed free printed mock test है जिसमें आपको 10 sectionals मिलेंगे 10 full length mocks मिलेंगे और ये आपको आपके this will be delivered at your doorstep and this is offer on iconic or all 9 months and above subscriptions so उसमें भी offer है make sure that you are subscribing to this okay because mocks बहुत important होते हैं and
दिस इज द ओनली थिंग लेफ्ट इन अप्रैल्स कैलेंडर. 30th अप्रैल को आपका प्लस क्लास होने, सॉरी प्लस मॉक, प्लस स्टूडेंट्स के लिए बस मॉक्स अवेलेबल है. सो इफ यू आर प्लस स्टूडेंट प्लीज मेक श्योर कि आप 30th अप्रैल वाला भी मॉक दे, इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर क्लैट येट. अब स्लैट 2023 के मॉक टेस्ट सीरीज आ गए हैं जो हमने स्टार्ट किया है, लाया है आपके लिए, जिसमें आपको 12 कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शनल टेस्ट मिलेगा, 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा. एंड दिस ऑफर इज ओनली फॉर अवेलेबल, आपको ये कितने में मिलेगा? ओनली 665 रुपीज में. एंड इफ यू आर बाइंग दिस, अगर 665 में आपको खरीदना है ये, तो प्लीज यूज माई कोड Vaishnavi10, Vaishnavi10 to get it on at 665 only. Enroll now. और राइट, तो ये एक बैच है. अगर आपको, आप सोच रहे हो कि किस में इनरोल करें, कौन से बैच में इनरोल करें, अगर हम प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो एस लीगल इज अ बैच जो क्लैट 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए है, अगले साल जिनको क्लैट देना है. मैं इस बैच में इंग्लिश लैंग्वेज दे रही हूँ. सो इफ यू आर सब्सक्राइबिंग टू दिस बैच, प्लीज यूज माई कोड दैट इज Vaishnavi10 to get up to 35% off and extension period as well. The Warriors is a droppers batch जो CLAT 2024 aspirants के लिए. Again, I am the one taking English language in all the batches that are running. Okay, so CLAT के लिए जितने भी batches run हो रहे हैं, I'm taking English language. So if you like my class and you want to subscribe to the plus sessions, then use my code Vaishnavi10 to get up to 35% off. All right, so let's begin. Yes, Manas, editorial होगा. Now the editorial we will be beginning. Okay, promising bill. शुरुआत करते हैं. Please pay close attention. Loving you was rare. Okay, promising bill. Rajasthan's initiative on a gig workers welfare board heralds good tidings. Okay, so basically देखो कितना अच्छे से यूज किया गया है heralds. So the news is of heralds मतलब something that is about to happen. ठीक है, you get to know, you are anticipating something is coming and something good is coming, good news. Okay, so this becomes your conclusion. ये आपका conclusion हो जाता है. So let's begin with the passage. With an estimated 8 million people employed in an industry built on the back of the smartphone revolution, gig work has become a major source of jobs for the youth of India. Now, this is a very, very general statement, लेकिन आपको इससे पता चल जा रहा है कि the author is going to talk about gig works. Okay, so ये complete main idea नहीं है. This is just the introduction of the main idea कि 8 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड इस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं. स्मार्टफोन रेवोल्यूशन आने के बाद गिग वर्क बहुत ज्यादा मेजर सोर्स ऑफ जॉब्स बन गया था इन इंडियन यूथ. ओके, इट गोज विदाउट सेइंग दैट इन अ कंट्री वेयर इनफॉर्मल लेबर एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैव डिफाइंड द नेचर ऑफ द jobs market in the last decade, the gig economy has been a beneficial outlet of employment. So this is something that the author is trying to say over here. ठीक है, ये है मेन आइडिया आज का. राइट, सो बेसिकली यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इट गोज विदाउट सेइंग, मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि एक कंट्री जो जहाँ इनफॉर्मल लेबर, ठीक है, फॉर्मल लेबर नहीं, इनफॉर्मल लेबर और अनएम्प्लॉयमेंट डिफाइन कर दिया है जॉब मार्केट को लास्ट डेकेड में, पिछले 10 सालों में. गिग इकोनॉमी अब इस काइंड ऑफ सिचुएशन के लिए एक बहुत बढ़िया आउटलेट बन गया है एम्प्लॉयमेंट का. ओके,
बढ़िया आउटलेट बन गया एम्प्लॉयमेंट का। दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ यूथ एंड माइग्रेंट वर्कर्स। तो ये किसके लिए स्पेसिफिक, अब नाउ डिटेल्स, यूथ और माइग्रेंट वर्कर्स, जितने भी बाहर से जो दूसरे स्टेट से या जो यूथ हैं वो जो आते हैं काम करने, उनके लिए स्पेशली सही सच है ये, particularly सच है ये, as they seek a ready and quick means of securing finance and flexible hours। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, because they are the ones that who are searching for, यही लोग सर्च करते हैं ऐसे जॉब्स जिस जो जल्दी मिल जाए, जिसमें फाइनेंशियली वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, सिक्योर हो जाए कुछ पैसे, और फ्लेक्सिबल आवर्स भी मिल जाए ताकि 2-3 काम साथ में कर सके। तो ये एक बहुत यूथ ही करता है जनरली, अब माइग्रेंट वर्कर्स करते हैं जनरली, तो इनके लिए ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। एन ऑप्शन यूज बाय इनफॉर्मल वर्कर्स हु हैव यूज्ड गिग्स फॉर मूनलाइटिंग। तो ये एक ऑप्शन है किनके लिए, ऐसे लोगों के लिए जो मूनलाइटिंग करते हैं, एज इन दे वर्क इन ऑड जॉब्स, ऑड आवर्स वाले जॉब अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल जॉब दैट दे हैव, उनके लिए ये जो गिग्स हैं वो बहुत फायदेमंद चीज हो गई है। विथ ग्रोइंग स्मार्टफोन्स यूज एंड रिलायंस ऑन एप्स फॉर डेली नीड्स एंड पर्पसेस, द गिग इकोनॉमी इज ओनली सेट टू फ्लरिश इन टर्म्स ऑफ यूजेज एंड अपॉर्चुनिटीज। ओके, सो बेसिकली द ऑथर इज डिस्क्राइबिंग कि कैसे, व्हाट आर द बेनिफिट्स, यहाँ से यहाँ तक द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ gig economy, right? Benefits of gig economy. Okay, so that is what the author is saying कि अब यहाँ पर बोल रहा है with growing smartphones, oh, I have to change, growing smartphones use and a reliance on apps for daily needs and purposes, हम जितना ज्यादा रिलाय करने लगे स्मार्टफोन्स पे, उससे भी देखा जाए तो गिग इकोनॉमी फ्लरिश करेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा as opportunities। Yet, अब यहाँ पर contradiction आ गया है, yet increased competition among platforms and the availability of a cheap labor force have led to a lowering of incentives for gig workers, and even as their workload and uncertainty of work hours have increased significantly relative to pay, which has also become insufficient for many। So basically ये वाला जो है, इस वर्क में क्या ड्रॉबैक्स हैं या क्या खामियां हैं उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, ऐसे तो ये जॉब बहुत ज्यादा फ्लरिश करेगा, बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा चीप लेबर बढ़ते जा रहा है, बिकॉज कंपटीशन बढ़ गया है वर्कर्स के बीच में, तो उसकी वजह से उनको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, अनसर्टेन आवर्स में काम करना पड़ रहा है, और फिर भी बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। ओके, सो दिस हैज बिकम अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम फॉर मेनी। ओके, adding this to the fact that gig workers are not recognized as workers, उनको workers मानते ही नहीं है पहली बात तो, adding adding this to the fact। okay, so इसी fact में हम और add करने वाले हैं, right? अगर आप मेरे प्लस बैच में हो तो आपने देखा होगा, हमने किया है कीवर्ड्स फॉर एस लीगल एंड लेवल अप, दोनों बैचेस के लिए किए हैं हमने कीवर्ड्स। तो उसमें उससे आपको आज बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि येट जो लिखा हुआ है यहाँ पर, येट इज द कॉन्ट्रडिक्शन ओवर हियर, एंड एडिंग दिस टू द फैक्ट, मतलब इसी में और आगे ऐड कर रहा है। अगेन, यू डोंट हैव टू रियली रीड दीज थिंग्स, यू जस्ट हैव टू स्किम, आप तुरंत स्किम करके आगे बढ़ सकते हो। Recognized as workers but partners by most aggregating platforms, and that they lack any social security or related benefits due to them as workers. Working conditions have become increasingly harsh in an industry that is no longer a fledgling one। Okay, तो uh, उनको वर्कर्स कंसिडर नहीं किया जाता है, उनको बेनिफिट्स नहीं मिलता है, एज अ वर्कर को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो बेनिफिट्स नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जॉब सिक्योरिटी बहुत लैक करती है, और उसमें बेनिफिट्स बिल्कुल नहीं है जो वर्कर्स को मिलते हैं बेनिफिट्स, और इसकी वजह से कंडीशंस बहुत हार्श हो गई है काम करने की। और अभी क्योंकि ये अब एक ऐसा फील्ड नहीं रहा दैट इज अ फ्लेजिंग वन। ओके, दैट मीन्स अभी उड़ना सीखा नहीं इसने, ये अब दिस हैज बिकम अ वेरी कॉमन फील्ड, या बहुत ही
competitive field हो गया है. This is now evident in growing flash strikes by gig workers. तो sudden strikes, flash strikes यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये कैसे दिख रहा है हमें, इसका प्रूफ कैसे मिल रहा है ऑथर को? हम जब देखते हैं कि इतने सारे sudden strikes पे जब जाते हैं गिग वर्कर्स, तब हम इसका एविडेंस देखते हैं. दैट इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग. सो बेसिकली बेनिफिट्स बताया गिग इकोनॉमी का, एंड देन द ऑथर इज सेइंग कि क्या क्या ड्रॉबैक्स है अब इसमें. ओके, ड्रॉबैक्स यहां से यहां तक बताया है, या प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करने पड़ रहे गिग इकोनॉमी को, उसके बारे में बताया है. ठीक है. Seen in this slide, the decision by the Rajasthan government to deliver Rajasthan platform-based gig workers registration and welfare bill 2023 should be welcomed. तो अब seen in this slide, अब ये सारा कुछ information देने के बाद अब author आ रहा है फाइनली राजस्थान गवर्नमेंट ने जो किया है उसके बारे में कमेंट करने के लिए. ओके, सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ द बिगर पिक्चर दैट इज गिग इकोनॉमी. उसके बारे में बेसिकली द ऑथर हैज कवर्ड एंड देन गिवन द एग्जांपल कि अब जो ये स्टेप राजस्थान गवर्नमेंट करने वाली है, ये राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स की वो प्रोवाइड कर रही है प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स के लिए रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल जो 2023 में आने वाला है, आगे आने वाला है, शुड बी वेलकम. तो ये should be welcomed is the author's opinion, even if it will be introduced before the assembly election later this year. अभी नहीं आ रहा है लेकिन आने वाला है, फिर भी हमें इसको वेलकम करना चाहिए. That's what the author is saying. While the draft bill envisages a welfare board that will design welfare policies and hear grievances of gig workers on a piece rate basis, the specificities of the policies and how they might benefit the workers are still unclear. So basically bill बहुत ज़्यादा clarity नहीं दिया अभी तक, कि बोला है कि grievances सुनेंगे उनके और welfare policies बनाएंगे gig workers के लिए, लेकिन वो कैसे सॉल्व करेंगे इनका प्रॉब्लम, व्हाट आर दे गोइंग टू डू, हाउ इज इट गोइंग टू वर्क, इसका बेनिफिट्स क्या क्या होगा, बेसिकली इसकी स्पेसिफिसिटीज मतलब इसमें क्या क्या एग्जैक्टली होने वाला है वो अनक्लियर है. ओके, व्हाट वुड द बिल कंटेन. The board is expected to work towards a social वेलफेयर पर्पस. तो बोर्ड को किस तरह से वर्क करने का एक्सपेक्टेशन है, उन पे उम्मीद है कि वो एक वेलफेयर पर्पस की तरह काम करेंगे, विच विल बी financed by access on the digital transaction made by consumers on the platform that utilize the gig work labor. Not important कैसे काम करेगा, कैसे फंक्शन करेगा, ये उतना डिटेल आपको जानना नहीं है. This schema is not unfamiliar. Platform workers in the transport section in Thailand and Malaysia, for instance, benefit from health. अब और एक एग्जांपल दे रहा है कि कैसे ये प्रॉमिसिंग रहेगा. ठीक है, ये पहले भी किया गया है. इट इज नॉट अनफेमिलियर. दैट मीन्स इसको क्या कहते हैं, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बाय द वे? कैन एनीवन टेल मी ओवर हियर what figure of which figure of speech is this? Not unfamiliar. Not unfamiliar कौन सा figure of speech में को belong करता है? कल ही हमने इस पे स्पेशल सेशन में बात किया था कि ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं. I think the author is focusing on the lives of coders. It is certainly a challenge. Don't think over here, Ishant. किस पे focus कर रहा है? That is not important. Okay, so remove the first line that you thought. No, not oxymoron, not oxymoron. It is certainly a challenge faced by many due to the high number of individuals in the coding industry. Okay. किस पे फोकस कर रहा है? डोंट वरी अबाउट दैट. जिसका एग्जाम्पल्स अगर नहीं दिया है तो डोंट वरी अबाउट कि ऑथर किसको इंडिकेट कर रहा है. दैट इज यूजलेस, पॉइंटलेस है. इसको कहते हैं ऐसे वर्ड्स को जो नॉट यूज करके कुछ पॉजिटिव बनाते हैं. ओके, नॉट यूज करके कुछ पॉजिटिव बनाते हैं. दे आर कॉल्ड लिटोटिस. लिटोटिस, ओनोमेटोफिया. कौन सा साउंड है यहाँ पर आकर्षण? नो, ऑक्सीमोरॉन भी नहीं. नो. ओके, सो इट इज लिटोटिस. नॉट यूज करके अगर कुछ पॉजिटिव बोलना चाह रहे हैं तो दैट इज I am not unwell. Okay, when I say I'm not unwell, that means I'm doing fine, right? So instead of saying I'm well, I'm doing great, I just say I'm not unwell. Okay, so that is litotis. Yes, Ishant.
Allegory. Allegory. नहीं, लिटोटिस है. Platform workers in the transport section in Thailand and Malaysia, for instance, benefit from health and accident insurance as well as social security that is financed by a reduction of 2% for every ride. So basically, इनको बहुत benefits मिलता है. यहाँ पर ये कोई नया concept नहीं है और थाईलैंड और मलेशिया में इनको हेल्थ बेनिफिट्स मिलता है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, बेसिकली ऑल द थिंग्स दैट ओनली परमानेंट जॉब्स आर प्रोवाइडिंग राइट नाउ. ठीक है, ओनली परमानेंट जॉब्स आर प्रोवाइडिंग राइट नाउ इन इंडिया. उसके बारे में ऑथर एग्जांपल दे रहा है कि कैसे वहां पर हेल्थ बेनिफिट्स मिलता है और गिग वर्कर्स को यहाँ पर अभी तक कोई बेनिफिट नहीं मिलता है. तो ऑथर इज एंटिसिपेटिंग कि ये राजस्थान गवर्नमेंट का जो बिल है, इसके आने के बाद ये सब कुछ बेनिफिट्स तो डेफिनेटली ऐड होंगे उसमें, क्योंकि दे आर गोइंग टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, है ना. Recently, the union government passed the Code on Social Security, one of four labor codes, which also allowed for some social security for gig workers, but the scheme only remains on paper without proper implementation. तो और एक एग्जाम्पल दे रहा है, यूनियन गवर्नमेंट ने एक पास किया था कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, उसमें भी गिग वर्कर्स के लिए अपॉर्चुनिटी था, सिक्योरिटी था, लेकिन दिस इज ओनली समथिंग दैट इज गोइंग टू बी, अभी तक पेपर में ही देखा गया, इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक कोई देखा नहीं गया कि कहाँ लागू हुआ है. If Rajasthan's pioneering draft, if Rajasthan's pioneering draft bill takes off, other states could be compelled to utilize similar measures to ensure the welfare of gig workers. तो अगर ये राजस्थान, so the author क्या कर रहा है, उम्मीद लगाए बैठा है कि अगर ये राजस्थान का ये जो बिल है, ये जो ड्राफ्ट है, ये अगर काम कर जाता है तो बाकी स्टेट्स को भी इंश्योर करना पड़ेगा कि वो भी गिग वर्कर्स के लिए कुछ करें. ओके, सो दिस इज व्हाट द पैसेज इज. नाउ बिफोर आई से थैंक यू, आई वुड लाइक टू आस्क यू what is the tone of the passage. Okay, tone क्या है passage का? Yes. So I'm not unhappy. Okay, Nishita, good job. That is also an example of litotis, right? So you are happy then, right? Analytical, informative. Analytical हो सकता है, right? Analytical हो सकता है, but analytical is the type of passage generally. ठीक है, analytical कह सकते हैं, definitely कह सकते हैं. और और क्या कह सकते हैं? आई डोंट नो व्हाई पीपल आर स्टक. आपको समझ में आ जाना, आप लोग इंफॉर्मेटिव पे क्यों स्टक हो, आई डोंट अंडरस्टैंड. क्योंकि इंफॉर्मेटिव जनरली मैंने बताया रिसर्च साइंटिफिक पैसेजेस जिसमें कोई कमेंट नहीं करता ऑथर, कोई कमेंट नहीं करता अपने साइड से, दोज पैसेजेस कंप्लीटली न्यूट्रल पैसेजेस आर इंफॉर्मेटिव. ओके, but here the author is giving information as well as analyzing it. ठीक है, तो benefits बता रहा है पहले, उसके बाद उसका drawbacks देख रहा है. So this is an analysis. Okay, ये इसको कहते हैं analysis. And अगर later part of the passage को भी देखा जाए तो the author is heralds good tidings, so it is optimistic as well. No problem. This is optimistic as well. Okay, so because he is hopeful about the future, right? तो analytical हो गया type of passage, optimistic हो गया tone of the passage. ठीक है, all right, that brings us to the end of the discussion of today's promising bill. I will see you again. I will see you again when soon. So see you again soon. Thank you everyone. Bye, adios, auf Wiedersehen, tschüss everyone. Dankeschön. Thank you very